आज मेरा ऑफ था, so I thought why not go out. The weather is not so good though, but what a waste it would be to stay at home. So this is the entrance of the fort, of the castle, and this is how beautiful it is. यहाँ पे बहुत ही कम टूरिस्ट हैं, मेरे अलावा 2-3 और लोग हैं बस. And because winters का टाइम है, I'm already tired. बहुत थोड़ी सी ऊपर चढ़ाई थी चढ़ने के लिए, but it's worth it. बहुत ही beautiful, बहुत ही peaceful है. मैं अभी आप लोगों को और दिखाती हूँ अंदर क्या है. Look at it. It's so grand and it looks so good. ये यहाँ से नीचे का व्यू है, नीचे जो टाउन है. And this is the entrance. Hi everyone, in today's vlog I have come to a nearby town. It's called Borghetto and it has a beautiful ruin of a castle, and it used to be pretty grand in its old glory, but now there are only the external walls that remains. And because of corona, everything is pretty much shut down, the markets and everything, so I thought why not go to some quiet place. And this is very quiet, there are no other tourists here. It's closed, but I just thought I will show you from the outside how it looks. And because even inside it's just the ruins. The Borghetto town is very beautiful. It has a lot of water bodies flowing right in the middle of the town. So I will take you, after this castle, I will take you down to Borghetto town, and we will explore and we will see all the beautiful scenic spots. And this is where it shows how big, how grand it used to be. And these are just the external walls, and there's a river, and there used to be the castle. There was something really different about the things built in old times. Really fascinating. Very beautiful structures. Let's go out of the castle and we'll go down to the town area. One last look at the castle. On our way back, you can see how much I climbed to get up here. This says Borghetto and it points the arrow to this way. It's pretty slippery, but let's go. She left her home to find where she belongs. Her mother's scared to leave her all alone, but she got time and she knows what to figure out. This ain't in a dream, a place where it seems that love will come around. So don't stay, you regret it all too much. You regret it. तो ये है बोर्गेतो. सामने जो है ये है रिवर मिंचो, एंड ऊपर जो दिखाई दे रहा है आपको थोड़ा सा खंडर सा हिस्सा, वो है यहाँ का बहुत ही पुराना ब्रिज. पुराने ज़माने में तो 16 किलोमीटर लंबा हुआ करता था और पूरी सिटी को कनेक्ट करता है, लेकिन अब थोड़ा बहुत ही रह गया है, जगह जगह से टूट गया है. एंड मेजर पार्ट जो इसका है वो अभी भी यूज़ होता है और वहाँ पे कार्स वगैरह अभी भी चलती रहती हैं. काफ़ी सारे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे और बहुत अच्छे होटल्स हैं. अगर आप वीकेंड गेटवे के लिए आना चाहो तो बहुत ही अच्छी जगह है. ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर है, इट्स अ वाटर मिल, and in old times these water mills were used to mill all sort of cereals and grains. and लेकिन अब यहाँ पे ये सब नहीं होता है. पहले बहुत सारी मिल्स थी, अभी बहुत कम रह गई हैं, और वो भी सिर्फ एज अ like to show people of how it used to look in old times. The sun is coming up, so it's good. Nice sunny day.
There is the mistletoe. अब हम लोग एंटर कर रहे हैं एक चर्च में, जिसको कि यहाँ पे इटालियन में chiesa कहते हैं। ये जो चर्च है, इट्स मोन्यूमेंटल चर्च, एंड दिस चर्च इज़ वेरी वेरी ओल्ड. The last renovation records dates back to 17th century, 14th century, and 11th century. So it's from 11th century. बहुत ही beautiful, बहुत ही simple, modest architecture style का church है. And जो बेस्ट पार्ट है अबाउट दिस चर्च इज़ यहाँ पे बहुत ही फेमस आर्टिस्ट की बनाई हुई पेंटिंग्स हैं. And these paintings are from the 18th century mostly. जो ओवरऑल वाइब्स हैं यहाँ की बहुत ही पीसफुल हैं. एंड चर्च में एंट्री करने के लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते. तो कभी भी आप बरगैतो आओ तो डेफिनेटली come to this church and enjoy the peaceful vibe of this church and look at the beautiful paintings. Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. अब थोड़ा सा इस साइड एक्सप्लोर करूँगी. देयर इज समथिंग सो पीसफुल अबाउट दिस टाउन. यहाँ पे बहुत सारे लोग भी हैं मेरे आसपास अभी, लेकिन फिर भी इट डजंट फील वेरी क्राउडेड या बहुत ज़्यादा बिजी वाली वाइब्स नहीं है. बहुत ही पीसफुल वाइब्स है. मे बी बिकॉज यहाँ पे कॉन्स्टेंटली ये वाटर की साउंड चलती रहती है, तो दैट कुड बी वन रीज़न. एंड ऑल्सो जितने भी लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, एंड सारे लोग आराम से बिल्कुल अपने डॉग्स के साथ वॉक कर रहे हैं, कपल्स में वॉक कर रहे हैं. नोबडी इज़ रशिंग. तो वो वाइब भी बिल्कुल अलग है. काफ़ी अच्छे अच्छे होटल्स भी हैं यहाँ पे. आई कुड ओनली इमेजिन समर्स में यहाँ पे कितनी भीड़ रहती होगी. बट या ऑल टुगेदर वेरी गुड, वेरी गुड. Let's hang out a little more around the streets and see what is there. अभी इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है. आज तो फिर भी थोड़े लोग हैं बिकॉज़ आज संडे है और सबका ऑफ होता है, तो लोग आए हुए हैं बाहर. बट मोस्टली विंटर टाइम में बहुत ज़्यादा नहीं होता है यहाँ पे रश. थोड़े बहुत ही लोग हैं अपने बच्चों के साथ आए हुए हैं, एंड जस्ट टू एन्जॉय अ सनी डे. आसपास के ही लोग होते हैं. समर्स में बहुत ज़्यादा क्राउड होता है यहाँ पे. समर्स में इट्स वेरी गुड. अभी पीछे मुझे एक बंदा मिला था जिसकी साइकिल का कोई पार्ट नीचे पानी में गिर गया था. बेचारा बहुत देर से ढूंढ रहा था. मुझे लगा आई शुड हेल्प हिम. आई आस्क्ड हिम व्हाट इट इज़, बट ही सेड आई कांट सी इट प्रॉपर्ली कहाँ गिरा है करके. बट फाइनली आई जस्ट सॉ हिम अगैन and he said that he found it, so that was a good thing. It's a very very small town, and if I quickly take a tour I'll finish the whole town very quickly. So let's take a relaxed walk. आगे थोड़ा बहुत और दिख रहा है ruins castle के, and so I am guessing that in old times this whole town was guarded by that castle walls that are now pretty much in ruins, and थोड़ा बहुत ही उसका हिस्सा बचा हुआ है. and inside the walls there is this beautiful town Borghetto. अभी तो सारा टूरिस्ट ही हो गया है, एंड
There are mostly only hotels and homestays and restaurants, stuff like that, all for tourists. But it's very beautiful. It's very small, very pretty. You can see the ruins of the castle wall. It's very long from that corner where there was the big bridge, and there are people up there, even cars, a lot of olive trees. इतना beautiful, इतना clear water है यहाँ पे. I don't know if you guys can see, but it's very nice, clear blue sea green water. And this is the end of the wall. So we'll go back in the city now. Let me take you back. Here is where we came from. So we'll go back to this side. Anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. So the Visconti Bridge is basically a bridge come dam, and it was built in the 14th century. And look at this, it's still so fabulous. And basically it's commonly called Long Bridge by the foreigners and non-native Italians. It extends from west to east of the Mincio Valley. Now I'm back inside the town. There are some nice houses, some nice hotels, and I just love the vibes. बहुत ही quiet है, बहुत ही अच्छा है. Wow, ये क्या लगा हुआ है इनकी wall पे? I think it's some old wine that is dried here. यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ है वो यही है कि अगर वॉक करनी हो, लॉन्ग वॉक्स करनी हो, बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर मतलब गाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं होती, अंदर ही अंदर पैसेजेस होते हैं बहुत अच्छे अच्छे, और बहुत सारे लोग नहीं होते हैं. इंडिया में तो हर जगह बहुत सारे लोग हैं, तो वॉक करना बहुत मुश्किल हो जाता है. एंड ऐसे क्वाइट स्ट्रीट्स मिलना बहुत मुश्किल है जहाँ पे कि आप आराम से वॉक्स कर सको. हाँ, यहाँ पे एक छोटी सी पेंटिंग आर्ट गैलरी है. लेट्स चेक इट आउट. इट्स अ पिज़्ज़ेरिया. यहाँ पे बार का मतलब होता है कॉफ़ी शॉप, रेस्टोरेंट. सो दे आर सेलिंग सम नाइस पेंटिंग्स. गुड वंस. चलो चलते हैं आगे. पुराने पुराने ज़माने के घर हैं, बहुत ही चिल आउट वाइब्स हैं, लाइक बहुत ही चिल आउट वाइब्स हैं. थोड़ी थकान हो गई अब चल चल के. एंड ये वही जगह है जहाँ से मैं आपको सारी वाटर बॉटल्स दिखा रही थी. अब वापस चलते हैं. थोड़ा थक गई हूँ मैं. I'm a little bit tired, like not extremely tired, but abhi to get to the car also I have to walk a little bit, and I don't want to be walking too much here so that गाड़ी तक पहुँचने का ही हिम्मत ना रहे. So let's go, let's climb up and let's go to the car. And these tiniest ones, the teeniest of the dogs, are the most nasty dogs. They are 10 times more angry than the big dogs. Like, they're angry for no reason. They will just come to bite you. Yeah. But they are very cute, so everyone keeps them.
now I'm saying bye bye to Borghetto and I'm exiting the town. I will have a small hike up to the castle and from the castle to the car, and then I'll go home. Yeah. So this is Borghetto for you. I think I pretty much covered all the streets. I think. Or maybe if I come a third time, I will see if there are more streets. And I really, really hope that I can come here in summers, because I know in summers it'll be much better. There's a beautiful house on the hill, and yeah, I feel that in summers it'll be much better and it will be a different vibe, because so far I've only been hanging out in winters and I don't like winters personally. My hands are freezing and my face is frozen, so I don't really enjoy being out. I just get out because I have to, because you have to get some sort of physical activity, otherwise your body will also not feel good. But yeah, I think in summers it will be better. So I found another way instead of climbing the stairs, because अगर मैं stairs से ऊपर जाती तो मुझे फिर नीचे उतरना पड़ता वापस. तो मैं स्ट्रीट के रास्ते से जा रही हूँ. थोड़े बहुत यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं, एंड या ये रास्ता मुझे लगता है उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं पड़ेगा, तो मैं इस रास्ते से जा रही हूँ वापस. सो दिस इज़ अ लिटिल बिट ऑफ अ हाइक, थोड़ा सा चढ़ाई है यहाँ पे, बट इट्स स्टिल बेटर, क्योंकि ये सिर्फ मुझे मेरी कार तक लेके जाएगा, फिर मुझे वापस नीचे नहीं उतरना पड़ेगा. There are some really beautiful leaves that I came across. इतनी अच्छी शेप है इनकी, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई फैन की शेप में. Very beautiful. And यहाँ पर इनके seeds टाइप के भी गिरे हुए हैं. Even the seeds are very pretty. I don't know what it is. This tree doesn't bear flowers, I guess. इसमें सिर्फ seeds ही seeds हैं. It looks very beautiful. I've almost reached now to the main street. यहाँ पे बहुत प्यारा सा एक स्टैचू लगा रखा है. And the park area is also finished. And now I am on the main street जहाँ पे मैंने गाड़ी पार्क करी है. From there I had started going up from here, the way that's going up to the castle, and then वहाँ से नीचे जाके बोरगेत्तो टाउन घूम के और वापस आई हूँ. अपने फ़ोन से ही शूट कर रही हूँ और जितनी भी ऑडियो है वो भी मेरे फ़ोन की ऑडियो है, तो अगर ये बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल आपको नहीं लग रही है तो ये रीज़न है. लेकिन टाइम के साथ साथ व्हेन आई विल सी, अगर मुझे अच्छा लगता है ये सब करना तो आगे जाके मैं थोड़ा बहुत गियर्स वगैरह खरीदूँगी, एंड होपफुली थोड़ी ऑडियो क्वालिटी वीडियो क्वालिटी फिर आगे जाके अच्छी हो जाएगी. तो टिल देन take care of yourself and do watch my videos and do share it with everyone, and I will see you in the next video. I'm back in my house and it was a lovely day. Here is my Poochie. As you can see, I'm home. Falling through the cracks, emotional. I struggle to see what your reasons are. Sitting in your palace.